A very good afternoon, dear student. Okay, so I'm happy that today count will be 53 likes. I'm so happy for the same. Okay, okay. So last time we have seen the point of how to do the matrix addition, subtraction, and multiplication of two matrices. Like these points we have covered, and the implementation part also we have done it. Okay. So now today is a very important part is that in this assignment only this point is given, that is addition, subtraction, multiplication and transpose of matrix. But we are going to see more two functions of matrices. It is required for theory as well as practical. तो additional function हम लोग matrix के लेने वाले हैं. Okay, जो कि है saddle point and upper triangular. This point again we have to see. Okay, so what exactly transpose of matrix is? Just see the example here. Suppose the one matrix is given in which, let's say this is a 3 by 3 matrix, right? The number of rows will be 3 and the number of columns also 3. Okay, so transpose of matrix means just see the output here. Input will be this type of matrix we have given. The first row will be 1, 2, 3, second row will be 4, 5, 6, third row will be 7, 8, 9. Okay, so what will be the result of it? Okay, so result will be what? This is a transpose, means this 1, 2, 3, we are converting this first row, we are storing in output, that is in column. Okay, मतलब हमने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया. Similarly, the 4, 5, 6 is the second row, we are converting into the second column. Similarly, here 7, 8, 9 is the third row, we are converting into the third column. This is the concept is what the matrix transpose, means we are converting row to column and column to row. Okay, so now this is the concept, is a simple concept. We just writing, यहाँ पे जो first row है उसको हमने column में convert किया, जो second row है again we are converting the column, and third row we are converting again column. So here the row playing the role of column and column playing the role of row. This is vice versa. Okay, so likewise we have to see the logic of transpose of matrix. It's very simple function. It is having only a printout statement. Okay, so now we just concentrate on coding part, right? So now we move further onto the coding part here. Fine, everyone. Fine. Now we just starting the coding here. Okay, the same code, this code we have to convert in a switch case, dear student, because हमें switch case लगाते आना चाहिए कि कौन सा केस एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद कौन सा केस एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो भी हम लोग पार्ट सीखने वाला है. So we'll see one by one. Okay, now just concentrate here. Yes, enter it. Do the see out transpose of matrix. Okay, fine. So क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं. So how we are going to transpose of matrix displaying. Okay, so no doubt we can transpose the matrix A as well as B also. But हम लोग A के matrix का क्या करेंगे? Transpose of matrix A print किया तो भी चलेगा. Fine. So no doubt when we are displaying the transpose of matrix, first of all we required, no doubt matrix operation perform करने हैं, तो always remember that we have to use two for loops. Always remember that first for loop for number of rows, second for loop for number of columns are always there. Okay, so just take 1, 2 for loops for I equal to 0. Okay, when I is 0, it should be a 0. I think it's O. Okay, so I equal to 0. Okay, I is less than. Abhi, again we are revising our matrix A. A में हम लोगों ने number of rows के लिए n variable लिया था. That is I is less than n, I plus plus, I plus plus. Okay, just give the comment that n will be what? N is number of, n for what? Number of, yes, n for number of rows of matrix A. हम एक मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स ट्रांसपोज परफॉर्म कर रहे हैं. फाइन. सिमिलरली ओके, मैट्रिक्स A. फाइन. ओके, again we have to use second for loop here for j equal to 0, then j less than m, m for number of rows, set number of columns, and j plus plus. Fine. Now we have to do the comment of it, that is n for number of columns of matrix, that is A. Number of columns of matrix
matrix A. Fine. Okay. Now, just we are displaying the transpose of matrix means क्या? रो को कॉलम करना है, कॉलम को रो करना है. So just do the see out statement here. See out, see out, see out. Yes, a slash t. Then display see out. किसको डिस्प्ले करना है? A of ij. Just printing the A of ij here. A of ij. Right? Actually, this is our simple matrix here. Okay, ये क्या हो गया हमारा? Simple matrix हो गया. Clear everyone? Fine. Just run it. Code. Run the code. Then we can see the what exactly the requirement of it. Okay. Yes. Enter the number of rows. That is 2. Number of columns again 2. Enter the matrix. That is 1, 2, 3, 4. Right? Enter it. Yes. Okay. Again we have to enter it. No problem. 2, 2, 4, 5, 6, 7. Fine. Just see here, the transpose of matrix will be what? 1, 2, 3, 4. Means जो हमारा first वाला matrix है, just go to the upper side in output window, in output console. In output console, I'm just wanted to show here that is one important part is that जो output का window था उसके बारे में बोल रही थी. ओके फाइन. हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्प्ले किया. यस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या डिस्प्ले हो रहा है? जो हमारा मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4 एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है. ट्रांसपोज क्या करना है? रो को कॉलम करना है, कॉलम को रो करना है. तो क्या करना पड़ेगा? नो नीड टू टेक थर्ड वेरिएबल, फिर मैट्रिक्स को कॉपी करो, फिर उसको प्रिंट करो. नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द लाइन्स ऑफ कोड हियर. We can just displaying C out instead of I, we are using J. Fine. So just do in that coding the transpose of matrices. Okay. So we just focusing on that part. Just concentrate here. We have to convert this J into I. Yes. Go to the C out statement. C out, that is IJ. Yes. Yes. C out IJ है. यहाँ पे क्या करना है? I को किसमें convert करना है? यहाँ पे चेंज करना है. सी आउट. यस. जे जो जे था उसको आई बनाया, जो आई है उसको जे बनाया. अभी देखो मतलब हो गया हमारा काम खत्म. हमेशा याद रखो जो फर्स्ट फॉर लूप होता है वो हमेशा नंबर ऑफ रोज के लिए प्ले करता है, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए. ओके. तो डिस्प्ले होते वक्त कैसे होता है? पहले रो फिक्स होता है और कॉलम वेरी होता है. मतलब पहला रो फिक्स हो गया 1, 2. वैल्यू किसके थ्रू भरते हैं हम लोग? फिलअप करते हैं रो के वाइज. बट यहाँ पे हम लोगों ने सी आउट करते वक्त उसका पोजीशन ही चेंज कर दिया. जे की जगह पे आई डाल दिया, आई की जगह पे जे डाल दिया. मतलब वो क्या करेगा? इजीली रो को कॉलम बना देगा, कॉलम को रो बना देगा. सिंपली वन स्टेटमेंट. एंड राइट डाउन आफ्टर दिस फॉर लूप, राइट डाउन द सी आउट स्लैश इन so that the matrix will display in new line. Okay. So it should be in a matrix form. Okay. C out, then slash in to find them semicolon. Fine. Just run the code now. Okay, just see everyone, the transpose of matrix is very simple. Yes, 2, again 2, number of rows and columns. Yes, fine. Then we are entering. Okay, just concentrate the transpose of matrix. I hope everyone is agree. Just go to the upper side in output. Just show the matrix A. यस. मैट्रिक्स ए में क्या है? जो पहला रो है 1, 2, ये फर्स्ट रो है. सेकंड रो है हमारा 3, 4. यहाँ पे आउटपुट में क्या दिख रहा है? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. जो पहला रो था 1, 2 वो क्या बन गया? मेरा कॉलम बन गया. हियर हियर द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है? यस, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा रो था 1, 2 यहाँ पे क्या हो गया? वो कॉलम बन गया. अगेन yes, and second row also in second column. Okay, if you have seen
the code of transpose, there is n number of different concepts are there. तीसरा तीसरा वेरिएबल लिया है, तीसरे वेरिएबल में स्टोर किया है, फिर से उसको डिस्प्ले किया, नॉट नेसेसरी टू डू directly. We can do the C out instead of I we have to write J. Okay, nothing change in that. Okay, so I hope so next will be we have clear the concept of transpose of matrix. रो को कॉलम में बना दिया, फर्स्ट 1 2 3 जो रो था उसको हमने कॉलम में डिस्प्ले किया, दैट्स इट. ओके, so this is a transpose of matrix. Next one will be saddle point coordinates in a matrix. Yes, we have to find out which is the saddle point. Okay, so just concentrate on the matrix operation, that is how we are going to find out the saddle point here. That is just concentrate. ये हमारा मैट्रिक्स है, दैट इज 3 by 3 मैट्रिक्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट मैट्रिक्स सैडल पॉइंट हम लोगों को जब फाइंड करना होता है, ओके, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका एक रूल है. व्हाट इज द रूल ऑफ सैडल पॉइंट फाइंडिंग? ऑलवेज रिमेंबर दैट we have to find out the element, maximum element we have to find by column wise. Okay, कॉलम में वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए एंड रो में से वो सबसे मिनिमम होना चाहिए. what I'm saying, अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वैल्यू विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट कॉलम में से ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. इन केस ऑफ फर्स्ट कॉलम हियर जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ये कॉलम है जो हमारा फर्स्ट कॉलम है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉलम हियर. ओके, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसमें जस्ट चेक करो ये फर्स्ट कॉलम में सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू है 7. ओके, एंड व्हाट अबाउट रो वाइज, रो वाइज हमारी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू टेक फ्रॉम यस कॉलम वाइज एंड मिनिमम वैल्यू क्या, वो वही वैल्यू रो में चेक की जाएगी तो वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए. दैट्स व्हाई 7 विल बी व्हाट, 7 इज द सैडल पॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर. सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सैडल पॉइंट. सपोज मैंने 4 को लिया, व्हाट अबाउट 4, 4 कॉलम में बड़ा होना चाहिए. यस, इन केस ऑफ 7 हम लोग हटा देते हैं. सपोज हमारा इतना ही मैट्रिक्स है, दैट इज 2 by 3 का मैट्रिक्स है. लेट से हमारा नेक्स्ट जो रो है वो नहीं है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस 2 रो ओनली. ओके, सो 4 जो हम लोग लेते हैं, 4 कॉलम में से क्या है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 कॉलम में क्या है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू. ये फर्स्ट कॉलम में मैं चेक कर रही हूँ और रो में मैं चेक करूंगी तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू रो it's small. That's why 4 again we can say that it is a saddle point. Okay, so according to that we have to calculate the saddle point concept. फिर से मैं रिपीट करती हूँ, saddle point coordinates in matrix means how we are going to find out the saddle point is for column wise it is a maximum value होनी चाहिए, 1 4 7 से 7 greatest है, and for row wise it is a minimum. Okay, now again we'll see the next example of it so that again you can easily clear. Okay, just see the 1 by 1 matrix here. Okay, just see in first matrix, just highlighted the 1 here. Okay, 1 is the smallest in its row. Yes, row में वो smallest है, but column में वो बड़ा है क्या, नहीं, but not the largest it is in column, so it is not a saddle point. Okay, 1 को हमने highlight किया, but 1 no doubt रो में छोटा है but कॉलम में से वो बड़ा नहीं है, उसी रिस्पेक्टिवली कॉलम में वो बड़ा होना चाहिए, but it's not greater, that's why it is not a saddle point. If we are talking about the 7 value, okay, so just see here, 7 is the smallest in its row. Yes, row में 7 smallest है. Okay, just check here, but column में से वो बड़ा है क्या, yes. If we are talking about the second row here, in row 7 is the smallest value, first condition is true, but it should be greatest on column also. तो कॉलम में भी वो क्या है, बड़ा है और रो में से छोटा है, दैट्स व्हाई इट इज अ सैडल पॉइंट. सो लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट find out the saddle point here. So I hope everyone is clear. If you are talking about 2, 2 is the smallest in row, but what about it should be greatest in that particular column, but वो नहीं है, that's why it's not a saddle point. So this is the concept of saddle point of matrix. Now we focused on the implementation part here. Okay, we have to use or perform this program using switch case. मतलब हमें switch case लगाते आने चाहिए और उसके हिसाब से हमें कोड करके आना चाहिए. Okay, again this code you can represent in different way, like using functions you can do this. Okay, so next time we'll do the
प्रोग्रामिंग यूजिंग फंक्शन. ओके, displaying saddle point here. Okay, अभी हमें क्या टास्क करना है? We have to do two parts here. हमें क्या करना है? रो वाइज मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, so first of all we have to declare two variables, that is minimum and maximum. Okay, just declare that two variables on upper side. Fine. So what is the minimum and maximum? We have to declare it two variables. Okay, again I am recalling here. मुझे क्या करना है? मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मिनिमम कहाँ से लेंगे? रो में से मिनिमम, कॉलम में से मैक्सिमम. ओके, नाउ वी फोकस ऑन दैट कोड नाउ. ओके, फाइन. नाउ अभी हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन आवर फंक्शन. ओके, अभी हमें क्या करना है उसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट से रो में से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो जस्ट स्टार्ट द फॉर लूप हियर. फॉर कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे? रो में से. मतलब मेरा फॉर लूप में क्या आएगा? फॉर आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन, मैं रो की बात कर रही हूँ, मतलब कौन आएगा? वेरिएबल नेम इज आई इज लेस देन n. वेरी गुड. n सेमीकोलन देन n i प्लस प्लस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वो लगने ही वाला है, अदरवाइज हम लोग वैल्यू चेक नहीं कर सकते. ओके, अभी इसके अंदर हमें क्या करना है? देखो, वी आर यूजिंग मिनिमम वेरिएबल हियर. जस्ट write down the minimum. mean equal to mean equal to if you are doing the saddle point in matrix A, so we have to write here A of minimum, A of I and I मतलब रो को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कॉलम. सेकंड डायमेंशन A of I 0, 0, it's not a J, it's 0, semicolon. Okay, so what is the meaning of this statement is? Okay, अभी देखो हमें क्या करना है? ये जो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंडिंग आउट, हमें रो में से मिनिमम फाइंड आउट करना है. मतलब फॉर लूप के हिसाब से कौन वेरी होना चाहिए? कौन वेरी होना चाहिए? रो. बट कॉलम वेरी होगा क्या? नहीं. आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस व्हाट आई एम सेइंग हियर. क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ए ऑफ आई का मीनिंग क्या है? मेरा कौन वेरी होगा? जो हमने एग्जांपल में देखा, सैडल पॉइंट में से रो में से सबसे छोटी वैल्यू निकालनी होती है, कॉलम एज इट इज होता है. आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. एवरीवन जस्ट रिकॉल द इमेज ऑफ इट, जो मैंने स्लाइड शेयर में दिखाया आपको, जो इमेज दिखाई थी सैडल पॉइंट की. आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. मतलब हमारा रो वेरी होता है. लेट्स से मैंने मैट्रिक्स में लिया 1 2 3 4. ओके, सपोज आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ. ओके, जस्ट स्टॉप द शेयरिंग. ओके, फाइन. ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर एवरीवन. ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट. यहाँ पे हम लोगों ने ए मिनिमम ए ऑफ आई 0 क्यों लिया? क्योंकि आई में मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो मुझे कहाँ से जाना पड़ेगा? रो वाइज जाना पड़ेगा. इसलिए फॉर लूप में वेरी कौन होगा? आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2. ओके, मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. ओके, तो मिनिमम में मैंने क्या किया? फर्स्ट लोकेशन की जो वैल्यू आई भी का पॉइंट कर रहा है 0 पे. ओके, आई का पॉइंट कर रहा है मेरा, वेयर इज आई नाउ? ये देखो, आई मेरा कहाँ पे है? आई ये है, मतलब आई रो है. ओके, सो आई क्या होगा? यहाँ पे चेक करेगा, वेरी कौन होना चाहिए? दिस वन. एवरीवन एग्री विद दिस? ओके, उसमें से मुझे मैंने क्या किया? ए ऑफ आई, आई मतलब रो को वेरी कर रहा है, और 0 मतलब मेरा कॉलम, 0 लोकेशन का कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम. उसमें से मुझे क्या करना है? मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. समझ में आया सबको? व्हाई वी आर राइटिंग ए ऑफ आई एंड 0. आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को. और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को. गॉट इट एवरीवन? क्लियर दिस पॉइंट? Okay, thank you so much. Fine. So now again we are moved to the coding part. J plus plus. Okay. This for loop we are using for what? Just concentrate here, dear student. Just upper side में करो window so that everyone can easily visible it. Okay. Code अच्छे से दिखना चाहिए. तो screen को सिर्फ क्या करो?
यस, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना चाहिए. फाइन. यस, वेरी गुड. ओके, जस्ट डू द लोएस्ट साइड. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट हमने क्या किया, हमने सिर्फ अगेन आई एम रिवाइजिंग, मिनिमम नाम के वेरिएबल में, मीन नाम के वेरिएबल में हमने मैट्रिक्स के जीरो लोकेशन, आई भी कहाँ पॉइंट कर रहा है जीरो पे, कॉलम भी जीरो को पॉइंट कर रहा है, तो जीरो लोकेशन के जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एज अ मिनिमम में स्टोर किया. अब तक हमें मिनिमम वैल्यू मिली है क्या? वी आर नॉट गेटिंग द मिनिमम वैल्यू हियर. कब मिलेगी? जब हम उसको फॉर लूप में डाल के चेक करेंगे. ओके, सो नो डाउट जो सेकंड फॉर लूप है हमारा j इक्वल टू 0, j लेस देन, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट्स नॉट n, इट्स m. इट शुड बी व्हाट? m. ओके, फाइन. क्योंकि मुझे मिनिमम जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कैसे फाइंड आउट करनी है? रो वाइज फाइंड आउट करनी है. फाइन. सो अभी हम लोग m नंबर ऑफ कॉलम्स को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है. फाइन. ओके, अभी राइट डाउन द कोड हियर. if in bracket minimum, mean variable mean is greater than or equal to a of ij, a of ij. Okay, so what we'll do here, just enter it and curly bracket start. पहले हमने क्या किया था वो फिर से रिपीट करती हूँ. हमने सिर्फ फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू स्टोर की, अब तक हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिली है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पहले वाली जो वैल्यू है, लेट से हमारे मैट्रिक्स में पहले वैल्यू 1 है. ओके, 1 ये वैल्यू मिनिमम में स्टोर करके रखिए. बट मुझे क्या करना है, उससे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो मुझे इफ लूप कैसे लगना पड़ेगा? द वैल्यू ऑफ मीन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ आई जे. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लोकेशन में मतलब नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वैल्यू, ओके, वो वैल्यू जो वैल्यू होने वाली है उसको हम लोग जब चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? अगेन देर इज फाइन. सो वी हैव टू चेक द मिनिमम वैल्यू हियर. ओके, अभी मेरा एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ. सपोज मुझे मिनिमम वैल्यू लेनी है. ओके, मैंने एक वैल्यू को मिनिमम में स्टोर किया, उससे मुझे छोटी वैल्यू कब मिलेगी? जब मैं इफ लूप में कंडीशन डालूंगी मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अदर वैल्यू. समझ में आ रहा है? इससे वैल्यू जब छोटी रहेगी ए ऑफ आई जे की, तो ही हम लोग मिनिमम में स्टोर कर सकते हैं. आई होप एवरीवन इज क्लियर दिस स्टेटमेंट. एवरीवन राइट डाउन देयर, मिनिमम इक्वल टू मीन इक्वल टू ए ऑफ आई जे, a of I j, semicolon. Okay, just take another variable, that is row 1, row1 equal to I. We are declaring, okay, fine, no problem. Do the, yes, row 1, row 2, column 1, column 2. Row 1, yes, we have to declare these two variables also. Row 1, comma, row 2, row 1, comma, row 2, column 1, comma, column 2. Very good. Okay, now we are going to store this value. Okay, fine. ओके, सो नाउ अगेन अभी क्या करना है, जो की मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी उसका क्या स्टोर करना पड़ेगा मुझे? रो की भी पोजीशन एंड कॉलम की भी पोजीशन. व्हाई? क्योंकि वही वैल्यू मेरे कॉलम में से भी हाईएस्ट होनी चाहिए, ये भी मुझे फाइंड आउट करना है. आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एम यूजिंग टू वेरिएबल हियर, दैट इज राइट डाउन द रो 1 इक्वल टू आई, रो 1 इक्वल्स टू I, semicolon, then second column 1 equals to j. Okay, column 1 equals to j. Okay, semicolon there. Okay, after column. Okay, fine. So why I'm doing this? Because जो जैसे उसको मिनिमम वैल्यू मिलती है तो मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग टू अनदर वेरिएबल, दैट इज रो 1 एंड कॉलम 1. फॉर व्हाट? क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन भी स्टोर करनी है, क्योंकि मुझे चेक करना है वो सैडल पॉइंट है कि नहीं है. मतलब मुझे मिनिमम रो में से मिनिमम मिला, वही मुझे कॉलम में से मैक्सिमम है कि नहीं. दैट्स व्हाई आई एम स्टोरिंग द पोजीशन ऑफ दैट वैल्यू. आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ. ओके, so again just this for loop if loop is completed. After two loops
to completion of if loop, just do the comment of end of if loop, this end if, this end for j. So again it's easily clear that हम लोगों को next code कहाँ पे लिखना है. Yes, no, it's the end for if loop. हमने वो किसको end किया है? Yes, and second will be what? End for j loop. Yes, end for what? J loop. I hope everyone clear this. Just enter it. Okay. ये दोनों लूप, ये दोनों का चेकिंग होने के बाद ये हमारा आई चेंज नहीं होगा. आप बोलोगे मैडम ऊपर का जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप के ये दोनों तो क्लोज हो गए, जे भी क्लोज हो गया, इफ भी क्लोज हो गया, क्योंकि मुझे मिनिमम मिल गया. अभी मुझे क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हुआ फ्रॉम कॉलम. ओके, सो कॉलम जैसे मैंने फर्स्ट रो को फिक्स किया है, रो में जो फर्स्ट वैल्यू थी और उसमें से मैं चेक कर रही हूँ, वैसे मुझे उसी पोजीशन के कॉलम को लेना है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेम लूप देयर. ओके, सो राइट डाउन देयर, टेक मैक्स वेरिएबल, मैक्स, write down max equal to a of अभी मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है. a of यहाँ पे क्या आएगा? अभी मुझे कॉलम पे काम करना है, रो पे नहीं करना है, तो a of क्या आएगा यहाँ पे? रो. एग्जैक्टली 0 j. यस, 0. और दूसरे इसमें आएगा कॉलम, सेमी कॉलम. डोंट राइट j here, that is a column 1. write down the column 1. why? क्योंकि मुझे यस ये देखो, जिस कॉलम की वैल्यू मतलब जो रो है और जो कॉलम है. ओके, फिर से हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर. ओके, स्टॉप द शेयर. ओके फाइन, अगेन आई एम शेयरिंग इट. जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. अभी क्या किया, लेट्स से मुझे रो में से ये छोटी वैल्यू मिल गई. ओके, रो में से मुझे छोटी वैल्यू मिल गई, तो मुझे मेरा क्या फिक्स हो गया यहाँ पे? रो भी फिक्स हो गया और कॉलम भी फिक्स हो गया. ओके, अभी जिस वैल्यू में लेट से मुझे 7 थर्ड रो में मिला, बट मेरा कॉलम कौन सा चेक करना है मुझे? जिस लोकेशन पे, जो थर्ड रो में जिस पोजीशन में मुझे सैडल पॉइंट लेट से 7 जो कि मिनिमम मिला है रो वाइज, उसी कॉलम, उसी वैल्यू के कॉलम को मुझे क्या करना है? चेक करना है कि वेदर this value that we have got is maximum or not in that column only. I hope everyone is clear. इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए वहां पे j यूज नहीं किया है, कॉलम 1 यूज किया है. आई होप एवरीवन क्लियर दिस. क्योंकि मुझे ये फिक्स हो गया मेरा कि इस रो में मुझे मिनिमम वैल्यू मिली है, नो डाउट, बट उसी कॉलम में मुझे चेक करना है, जो कि मेरा कॉलम रहेगा, ये मेरा कॉलम है, इसी कॉलम में मुझे चेक करना है, तो ही समझ में आएगा वेदर इट इज सैडल पॉइंट और नॉट. रो तो मेरा फिक्स हो गया, रो में मुझे मिनिमम मिला, उसी कॉलम में चेक करना है जो पर्टिकुलर लोकेशन में. मान लो 8 सपोज मिनिमम वैल्यू होती थी, तो मुझे किसको चेक करना पड़ता था? सेकंड कॉलम को. समझ में आ गया सबको? बट हमें कौन सी मिनिमम वैल्यू मिली है? अवर मिनिमम वैल्यू विल बी व्हाट? दिस वन. इसीलिए मुझे उसी रिस्पेक्टिवली कॉलम में चेक करना है. दैट्स व्हाई वी आर पासिंग द वैल्यू हियर a of 0 column 1. I hope it is clear to everyone. Okay, now we switch over to our coding part.